Okay, uh, good morning, students. So, welcome to Fluid Mechanics 2 video session. In the previous lectures, we started with we derived few equations, right? That is force exerted by the fluid jet on plate or vane. In that one, started discussing about the case one, that is when object is at stationary. So, I think in the yesterday classes, we finished all the cases with respect to like curved plate, right? That is the curved plate के ऊपर तीन derivations था. We finished all those three derivations. That is when water jet is hitting that particular or that curved plate at the center, and the second one is at the one of the tip of the curved plate, and that curved plate is symmetrical tha. And the third case was the jet is hitting the one of the tip of the curved plate, but the curved plate was unsymmetrical था. So ये तीन derivation हमने कल मतलब हमने सीखा, right? So in this particular video, we are going to continue with the same topic, but only thing is we'll move on to this case two. So case two is when object is moving uh, with some velocity. Well, let's consider the velocity is small u. Okay, because we are considering the velocity of the jet is v, and we are considering the velocity of the object is with moving with at a velocity of about u. Okay, so basically the case two is that the object is moving. In the case one, the object was a stationary. There were three cases. Here it is case two is when object is moving, we are going to consider. Okay, let's start. So in this one, once again, in case two, we are going to consider the first subcase. That is, we are going to consider the flat plate, and it is normal to the jet. So you can see the diagram. So this is once again, you already know this, you are familiar with this particular diagram. So here it is a pipe and which is having a nozzle. Since the nozzle is getting, the diameter is reduced, so whatever the speed of the or velocity of the jet is there, it is going to increase, and that velocity we are going to consider as v, and like it is going to hit the plate. In before it was like this plate was fixed, okay? But here in this case it is in moving. Clear? So this is very important point, that the main difference between the previous case and this case. Okay, without wasting time, let's continue with the derivation part. Okay, once again, see, I already told you the basic concept is impulse momentum principle, right? So here also impulse momentum principle comes into picture, and one more another few basic concepts comes into picture. If you understand this one, the derivation is very simple. Okay, you're going to follow the same procedure. The derivation part is very simple. If you know the derivation, even if you समझो आपने formulas memorize किया था, but unfortunately you like आप भूल गए थे, तो एग्जामिनेशन टाइम पे आप इसको अगर डेरिवेशन पता है, डायग्राम्स पता है, तो आप आराम से फॉर्मूला वापस फाइंड आउट कर सकते हो, so that you can solve the numericals. ठीक है, and it takes very less time to derive also. So चलो ठीक है, let's continue with the derivation. That is case 2 mein first one is flat plate is normal to the jet. That means this is a flat plate and it is placed normal to the jet. That means perpendicular to the jet. If this is a jet, correct hai? Though the particular plate is placed normal to the jet. Okay, this is like this. Okay, so this water and this is jet. Okay, see, above figure shows a flat plate held normal to the jet is assumed to move with a velocity u in the same direction as the jet. So if you see the diagram, this particular jet is there, no? It is moving in this x-axis, okay, at a speed or at a velocity of v. Okay? Whereas this particular जो plate है, it is moving at a velocity of u. You can see here. Okay? So that means the velocity of the jet is v and the velocity of the plate is u. That's why the case 2 is when the object is moving. Okay? Okay.
since the object is moving in the direction of the jet, that is, if the object is displaced in the direction of the applied force, then there will be a work done. So obviously, if you see the direction of the both the jet and the your plate, so you can see the both the direction is same. So that means the jet is moving in this direction and even the plate is moving in this direction. Okay. So what he's telling is, since the object is moving in the same direction as the force, so there is a work done. Matlab, obviously the plate is moving from one location to another location. That means there is a work done is happening. Okay. So that means you got an idea. That means in this particular derivation, the work done comes into picture. अगर आपने previous video देखा था ना, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो स्टेशनरी था, करेक्ट है? अगर स्टेशनरी है, दैट मीन्स वो फिक्स किया था. तो मतलब अगर जब वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से पानी उसको इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये प्लेट मूव नहीं हो रहा था. सो देयर मीन्स देयर इज नो वर्क डन. ठीक है. व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो दैट मीन्स ऑब्वियसली वर्क डन नहीं है. तो ये पॉइंट मैंने उधर लिखा भी था कि वर्क डन इज जीरो सिंस द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी. बट इफ इट इज मूविंग हियर, सो वर्क डन इज देयर. ठीक है. मतलब कहीं पे हमको आगे वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है. अब वो बाद में देखते हैं. Okay, you know work done is equal to force into displacement, and here I am going to consider the force in direction x. ठीक है. So इधर मैं लिखा हूँ where d is equal to displacement है. ठीक है. So एक important notice इधर लिखा हूँ. ठीक है. important point है. So इधर इस derivation में या इस concepts में दो या इस topic में जहाँ पे object is moving, so two concepts are very important. The first one is work done, which you already got to know. अभी मैं डिस्कस कर रहा था. The second one is relative velocity. ठीक है. वो भी मैं डिस्कस करता हूँ. See what is relative velocity. पहले देखते हैं work done के ऊपर. See you can say work done is equal to force into displacement, and force is in the direction of x direction. ठीक है. You can see the direction also हमने इधर दिखाया. So W is equal to Fx into D, and the unit for the work done is Newton meter or joules लिख सकते. ठीक है. These are the unit for work done, that is Newton meter, or Newton meter is also called as joule. ठीक है. चलो. See, in this case, absolute velocity of the jet V will not be the effective velocity with which the jet strikes the plate, because as the jet is about to strike the plate is also moved away from the jet with velocity u. Okay, now the concept comes relative velocity. See, what is the meaning of what these 4 lines or 5 lines? What it is telling is, see, whatever the in this case absolute velocity of jet will not be the effective velocity. So that means you are not considering. देखो, अगर एक सेकंड, सी जेट ऐसे मूव हो रहा है. ठीक है. इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, बट वेराज प्लेट भी मूव हो रहा है. करेक्ट है ना? जब ये प्लेट को हिट करने के लिए आएगा, बट तब उसका वेलोसिटी v नहीं रहेगा, तब उसका वेलोसिटी रहेगा विथ रिलेटिव वेलोसिटी रहेगा. मतलब इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं रहेगा. सो व्हाट एवर द इफेक्टिव वेलोसिटी यू आर गोइंग टू कंसीडर, सो दैट इज नॉट v हियर, बिकॉज अगर प्लेट स्टेशनरी रहा तो ये v से उसको धक्का मार देगा. बट जब धक्का मारने के लिए एग्जैक्टली एट दिस लोकेशन जब आए, इस लोकेशन पे जब आए ना, तब v नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी u मूविंग पे या प्लेट मूविंग पे. कितना वेलोसिटी से मूविंग है? u से. सो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू कंसिडर द रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है. सो ये सब रिलेटिव वेलोसिटी, ऑल दोस थिंग्स यू ऑलरेडी स्टडीड इन द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. ठीक है. रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर चैप्टर ही था, राइट? सो जेट स्ट्राइक्स टू द प्लेट विथ रिलेटिव वेलोसिटी. सो व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? Jet velocity minus plate velocity. So jet relative velocity, that's why I told we are going to consider the relative velocity concept in this particular derivation, because both jet is moving and also plate is moving. Okay. So now what is relative velocity? That is jet velocity minus plate velocity, that is v minus u. So that's why you can see here, ये आके इस पे धक्का मार दिया, हिट किया, तो ऑलरेडी प्लेट मूविंग पे था, वेलोसिटी हिट किया और उसके बाद ये आगे जा रहा है. सो दैट मीन्स नाउ द वेलोसिटी ऑफ दिस प्लेट विच इज मूविंग हियर
is v minus u. This velocity is called as relative velocity. ठीक है. So that's why if you see the diagram ना, अभी हिट होने के बाद या हिट करते समय उसका रिलेटिव वेलोसिटी था, तो जैसे हिट हुआ तो पानी स्प्लिट होगा, थोड़ा पानी उस तरफ जाएगा, थोड़ा पानी इस तरफ आएगा, उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, v माइनस यू, v माइनस यू, क्योंकि हिट कर रहा है v माइनस यू से, करेक्ट है, एंड v माइनस ही रहेगा, दैट इज बिफोर हिटिंग v माइनस यू था, आफ्टर हिटिंग हिटिंग या स्ट्राइकिंग v माइनस यू, क्योंकि देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्सेस, हमने ये अजम किया है. सो पहले कैसा था, ऐसे आके आई शो विद, पहले कैसे था, स्टेशनरी पे इधर आके स्ट्राइक करता था, तो ये v था, ये भी v था और ये भी v था. सो नाउ सिंस द प्लेट इज इन मोशन, जो भी वेलोसिटी पे वो धक्का मार रहा है दैट इज v माइनस यू था, जो भी स्प्लिट हो रहा है वो भी v माइनस यू, वो भी v माइनस यू. समझ में आ रहा है? ओके. सो relative velocity is given as jet velocity minus plate velocity. ठीक है. So now you can see let d is equal to dia of the jet, that is small d is dia of the jet, correct है? This one, and capital D is the dia of the your pipe. ठीक है. And small a is the cross sectional area of the jet, and you know cross sectional d दिया है तो already आपने numerical भी solve किया था. Small a is equal to pi d square by 4 है. ठीक है. And v is the velocity of the jet before striking है, and u is the velocity of the plate है, and relative velocity is v minus u है. ठीक है. So therefore jet will strike to the plate with velocity, that is relative velocity v minus u, and leaves at the outlet with the same velocity. That is what I was explaining. So that means ultimately आप याद रखो, जब object is moving है तो, and if it is a flat plate है तो velocity, striking velocity is v minus u, and even the water is leaving the tangentially from the plate is v minus u. ठीक है. Okay, now we need to calculate the force. So once again इसमें तीन चीजें फाइंड आउट करना है. एक फोर्स, that is what is that force, with how much force is exerting on the flat plate if it is plate is moving. The second one is work done, I already told, क्योंकि plate move हो रहा है बोले तो work done फाइंड आउट करना है. And the third one is efficiency फाइंड आउट करना है, वो बाद में देखेंगे. ठीक है. Okay, let's start with the first point, that is when the force exerted by the jet on the plate. Okay, mass of water strikes the plate. पहले देखो, ये बाद में भी कर सकते हैं, but ultimately you need to find out MFR, mass flow rate चाहिए ना, इसलिए mass of water strikes the plate is equal to rho into q, and you know q is equal to rho into a into v, where v is the velocity of the strike, और velocity of the strike मैंने बोला था relative velocity लेना है, so v minus u ले रहा हूँ, so that means rho into a into v minus u. अगर आप previous इसको देखा था तो हम mass MFR, that is mass flow rate को क्या लेते थे, rho into a into v direct लेते थे. Here v is changed to relative velocity, so that means v minus u हो गया. This is the main difference. ठीक है. So rho into a into v minus u लेना है. Okay. So now f of x is force acting in x direction. Now compute the force f of x by using impulse momentum principle. Once again, अभी जो भी changes था वो सिर्फ velocity के related था. उधर v था, इधर relative velocity v minus u हो गया. ठीक है. बाकी सब once again you are going to apply impulse momentum principle. So compute force f of x by using impulse momentum principle. So what impulse momentum principle states that whatever the force is there, that is f of x in the direction of x direction, is equal to rate of change of momentum in that direction only. So if you are taking x direction, the momentum is also in the x direction. Okay, so f of x is equal to rate of change of momentum in x direction. Now rate of change of momentum in x direction, you know, is nothing but initial momentum per second minus final momentum per second. Change of momentum is initial momentum minus final momentum, but is asking rate of change of momentum, that's why it is per second हमने ऐड किया है, और ये ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया. ठीक है.
Now momentum is mass into velocity. So initial momentum, it is mass into velocity, इधर भी final mass into velocity, but mass per second हम बाहर निकालते क्योंकि मास इज कांस्टेंट है दोनों साइड पे, तो मास पर सेकंड बाहर निकाल दिया, तो बचा तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, ये भी हमने पहले सीखा है। और इंस्टेड ऑफ आई एम राइटिंग इनिशियल वेलोसिटी आई कैन राइट वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग, क्योंकि इधर बिफोर नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज बिफोर लिख दिया तो वी हो जाता है, बट एट द मोमेंट ऑफ स्ट्राइकिंग इज रिलेटिव वेलोसिटी है, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग माइनस फाइनल वेलोसिटी और वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग। ठीक है, सो यू नो इनिशियल, फर्स्ट ये फाइंड आउट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन। सो अब देखो, अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो हिट करते समय एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या है, v माइनस यू, और y डायरेक्शन में क्या है, कुछ है क्या, लाइक नहीं, करेक्ट है ना। सो दैट मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू कंसिडर इज, वन सेकेंड, ओके, initial velocity or velocity at striking is v minus u, but final velocity or velocity after striking along x direction is zero, because जैसे वो हिट होता है या स्ट्राइक करता है प्लेट को, ऊपर और नीचे ऐसे चले जाता है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट है क्या, नहीं। सो दैट्स व्हाई फाइनल वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो, बट इनिशियल वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट इज v माइनस, ठीक है, same concept which we discussed in the previous classes. So we got to know if velocity of striking, we got to know velocity after striking, you know mass per second, that is already आपने इधर फाइंड आउट करके रखा है, करेक्ट है, सब्स्टिट्यूट कर लो, that is f of x is equal to rho into a into v minus u into v minus u minus 0, ठीक है, करेक्ट है ना। then rho into a into v minus u into v minus u, that is v minus u square. So that means f of x is equal to rho into a into v minus u whole square. अगर same flat plate placed normal to the direction of the jet, but plate is stationary, अगर उसका फॉर्मूला देखा ना सेम था, f of x is equal to rho into a into v square था। इधर उस कॉन्सेप्ट केस वन का और केस टू का कॉन्सेप्ट में एक ही डिफरेंस है कि इधर रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे हो, इसलिए सिर्फ v चेंज हुआ है, इंस्टेड ऑफ v स्क्वायर इट हैज बिकम v minus u square, because where u minus, sorry, v minus u is nothing but relative velocity। होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आई ऑलरेडी टोल्ड तीन चीजें फाइंड आउट करना है डेरिवेशन करके। द फर्स्ट वन इज फोर्स एक्सर्टेड, जो हमने कर दिया अभी, that is f of x is equal to rho into a into v minus u square. The next is work done. So you already know work done. Let's start. See, in this case, since there is a displacement of the plate, there will be a work done by the force f of x. Obviously, displacement हो रहा है प्लेट का, पहले भी मूव हो रहा था, प्लस ये वेलोसिटी ऑफ जेट हिट करने का, स्ट्राइक करने के बाद मूव हो रहा है at a relative velocity of v minus u, right? So what happens is, there is a work done. So what is work done? And since we are finding everything, whether it is a force रहने दो या anything, what we are doing is with respect to time कर रहे हैं ना, rate of change of momentum, all those things. So that's why even work done also I'm going to consider for per second, like work done per second. So that's why I've taken work done per second is equal to वर्क डन का क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड, ठीक है। सो ध्यान से सुनो, वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट पर सेकेंड ले रहा हूं तो इधर भी पर सेकेंड ले रहा हूं, ओके। नाउ डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, so इसका क्या है, इधर सेकेंड है, सो दैट मीन मीटर पर सेकेंड, या ये सेकेंड बोले तो टाइम, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम इज वेलोसिटी, इधर आप मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बोलो या डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी, करेक्ट है ना। सो दैट मीन्स दिस टर्म बिकम्स वेलोसिटी,
right? So that's why I written force into velocity of the plate, because plate is moving. वर्क डन किसका हो रहा है, प्लेट का हो रहा है, राइट? सो वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी ऑफ द प्लेट. इधर मैं लिखा हूं उसका, ठीक है, ओके. सो वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कौन सा, अलोंग एक्स डायरेक्शन एफ ऑफ एक्स. और वेलोसिटी ऑफ द प्लेट क्या है, सिर्फ यू है. अगर आप डायग्राम देखा ना, आई एम नॉट, सिर्फ वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ द प्लेट है, दैट इज यू, ठीक है. पानी और वेला प्लेट दोनों कौन सा स्पीड से जा रहा है, p माइनस यू, तो वो आपको पता रहना चाहिए. सो डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स वेरी सिंपल है. एंड एफ ऑफ एक्स तो आपने फाइंड आउट किया है, रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू स्क्वायर, जस्ट सब्सटीट्यूट. वर्क डन पर सेकंड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट किया था, रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू स्क्वायर इंटू यू. दिस इज योर वर्क डन, ठीक है. यूनिट क्या है वर्क डन का, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि वर्क डन पर सेकेंड है ना. सो वर्क डन का तो न्यूटन पर मीटर है, सॉरी न्यूटन मीटर है, बट पर सेकेंड है तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, या न्यूटन मीटर पर सेकेंड कैन बी कॉल्ड एज जूल्स पर सेकेंड, या दैट मीन्स न्यूटन मीटर इज आल्सो कॉल्ड एज जूल्स. और वर्क डन का दूसरा यूनिट वैट है, एंड यू कैन रिप्रेजेंट बाय कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है. सो दैट इज अबाउट आपका वर्क डन पर सेकेंड, ठीक है. बट there is one more important notice. This case is not practically feasible because the distance between the nozzle and the plate will go on increasing. However, if the series of plates is fitted on the wheel, there is always a plate facing the jet. So that means what he is trying to tell is, I'll show the diagram. See, इधर क्या होता है, समझो ये प्लेट नोजल फिक्स है एक जगह पे, पानी ऐसा विथ वेरी हाई वेलोसिटी आ रहा है, प्लेट को स्ट्राइक कर रहा है, बट प्लेट इज मूविंग. ये प्लेट क्या होगा, आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा, जाता रहेगा समझो. बट ये जो वेलोसिटी इसको हिट कर रहा है, वो धीरे 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 जैसे ये वर्क डन होता जाएगा तो कम होगा, मतलब इसका वेलोसिटी कहीं तो कम होगा ना. तो इधर समझो कुछ उजाला वेलोसिटी कम, सम 10 मीटर पर सेकेंड है, आगे 8 मीटर हो जाएगा, 5 मीटर, मतलब एफिशिएंसी कम होता जाएगा आगे जाने के बाद. एंड इट इज प्रैक्टिकली इट इज नॉट यूजेबल, ठीक है. So instead of that one, what they are telling is, if the series of plates are placed for a wheel or something, so then you can get the continuous work done. डायग्राम से दिखाता हूं. So that's why this is just a basic concept. Increasing. However, if the series of plates is fitted on the wheel, there is always a plate facing the jet. So that means जब अगर आपने number of plates एक wheel में place करके जैसे jet hit करता रहेगा, तो वो rotate होता रहेगा. तो उसमें से क्या होता है, हर बार हमेशा एक प्लेट गया तो दूसरा प्लेट आता है, एक प्लेट गया तो दूसरा प्लेट आता है. तो मतलब वेस्ट नहीं होगा इसका वेलोसिटी का, जो भी उसके वजह से वर्क डन होना है उसका जो भी है वो वेस्ट नहीं होता है. बट वेराज इफ इट कीप यू ओनली वन, प्लेट आगे चले जाएगा एंड चले जाएगा, बस उसका ज्यादा एफिशिएंसी कुछ नहीं रहती, ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल. ओके, we'll come to that point, but before that one we'll check it out the what we can say, efficiency, ठीक है, ठीक है. So that means we are going for the third concept, that is computation of efficiency, ठीक है. So now efficiency of the jet, क्योंकि अगर प्लेट मूव हो रहा है तो efficiency of the jet कम होता जाएगा, right? So now if you want to find out the efficiency of the jet, the formula is output power divided by input power, ठीक है. Let's say what is output power क्या है और input power क्या है. So now input power, so again, once again if you see the diagram, अगर आपने डायग्राम देखा ना, तो इनपुट पावर इज नथिंग बट दिस the jet which is coming from with high velocity, right? That means high kinetic energy है. So if you see the input power, that is input power, that is kinetic energy per second, ठीक है. So what is kinetic energy, half into m into v square per second. So now half into m, you already know, rho into a into v into
वी स्क्वायर, क्योंकि m पर सेकेंड है, करेक्ट है ना, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर पर सेकेंड है ना, तो ये मास पर सेकेंड इज नथिंग बट रो इंटू ए इंटू वी, एंड वी स्क्वायर ऐसे रखा. सो इनपुट पावर इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर इज वी क्यूब. सो इनपुट पावर बिकम्स हाफ इंटू रो इंटू ए इंटू वी क्यूब. ठीक है. नाउ विल सी आउटपुट पावर. आउटपुट क्या है, समझो इनपुट इज काइनेटिक एनर्जी विथ हाई वेलोसिटी से जेट उसको मार रहा है, स्ट्राइक कर रहा है प्लेट को, विच इज ऑलरेडी मूविंग. सो व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट इज द वर्क डन पर सेकेंड, करेक्ट है ना, वो और आगे जा रहा है. सो वर्क डन पर सेकेंड, सो ऑलरेडी यू कैलकुलेटेड वर्क डन पर सेकेंड, दिस इज द फॉर्मूला. सो आउटपुट पावर इज वर्क डन पर सेकेंड है, फॉर्मूला तो हमने फाइंड आउट करके रखा था, रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू स्क्वायर इंटू यू. सो आउटपुट पावर इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू होल स्क्वायर इंटू यू. सब्स्टिट्यूट करो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर. सो देखो एफिशिएंसी ऑफ द जेट इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर. सो रो ए कैंसल हो गया, बचा कौन सा, v माइनस यू होल स्क्वायर इंटू यू और हाफ इंटू वी क्यूब, फिर हाफ ऊपर लेके गए तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू वी माइनस यू होल स्क्वायर इंटू यू डिवाइडेड बाय वी क्यूब. सो दिस इज योर एफिशिएंसी ऑफ द जेट. समझ में आया? So that is what I was telling. Okay, three concepts you are going to derive in this particular case 2 when the object is moving. Especially we are going to consider the flat plate. The first is work done by the jet on the plate. The second one is work done. First one is force exerted on the plate. The second one is work done per second. The third one is efficiency of the jet. तीनों का हमने फॉर्मूलास डिराइव करके रखा है. ऑल दीज फॉर्मूलास आर इंपॉर्टेंट सो दैट वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स इन द फर्दर क्लासेस. ठीक है. सो वन सेकंड. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि देखो बाबा इधर कंटिन्यूस प्लेट्स है तो एफिशिएंसी कम होता है. सो वी नीड टू रिप्लेस बाय सम सर्कुलर व्हील के ऊपर वर्टिकल प्लेट्स फिक्स करो. तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, I will show with the diagram and we'll go with the derivation. So this is the concept. Basically क्या होता है, देखो अगर आप एक ही प्लेट रखा तो ये जो डायग्राम पहले देख रहे थे, तो ये प्लेट ऐसे आगे चला जाएगा, बट ये तो नोजल इधर ही है. जैसे जैसे आगे जाएगा इसका वेलोसिटी का भी एफिशिएंसी कम होता जाएगा, मतलब वेलोसिटी कम होता जाएगा, तो दैट मीन्स एफिशिएंसी कम होगा जेट का. अगर इसका जो वेलोसिटी जो आ रहा है, विथ हाई वेलोसिटी जो आ रहा है, उसको कंटिन्यूसली आपको यूज करना है और इसके वजह से हमको हमारा जो भी फायदा है, सिग्निफिकेंस है. सो व्हाट वी कैन डू इज यू टेक अ व्हील एंड प्लेस द इंस्टॉल द वर्टिकल प्लेट्स लाइक दिस एंड यू अप्लाई द सेम जेट ऑफ वाटर ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेट. जैसे ही हिट करेगा, सो ऑब्वियसली देयर इज अ वर्क डन, दिस मेंबर इज गोइंग फॉरवर्ड, करेक्ट है ना, तुरंत ये आगे जाएगा, तुरंत ये जैसे हिट होते ही तुरंत ये ऐसा आगे जाएगा. तो जैसे ये आगे जाएगा दूसरा प्लेट रिप्लेस करेगा इधर, तो मतलब कंटिन्यूस रोटेशन रहेगा हर एक इसका. सो इसके वजह से क्या होता है, all this whatever the kinetic energy will be converted to the mechanical energy and once again mechanical energy can be converted to electrical energy. ऐसा फायदा है. That is what we are discussing, like impact of jet can be used for application कहाँ पे, power generation पे, ऐसा पहले बात कर रहे थे ना. So like that. ठीक है. So this keeps on rotating, continuous रहेगा, no wastage of whatever that kinetic energy. ठीक है. Okay, let's. Okay, now series of flat vertical plates. ठीक है, not vanes, plates का बात कर रहा हूं. Force exerted by the jet on the plate. इसमें भी 3 फोर्स फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है एंड एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था. ओके, लेट अ जेट ऑफ डायमीटर d and the velocity v strikes the wheel tangentially at its lower edge such that the bottommost vertical plate is impinged at its center. So that means what he is telling is let the jet of the diameter is d, ये वाला, this is capital D, वो सब आपको पता है, and which is coming at the velocity of v and it strikes the plate which is fixed with the wheel, and
it is moving in the direction u. The impact of the jet will push the plate in the same direction as the jet and its position will be occupied by the another plate in succession. Already मैंने ये point भी आपको discuss किया. Let u be the tangential velocity of the wheel. So now once it hits, this is the tangential velocity of the wheel. तो ये move होता है, ठीक है? That is बिकॉज इट्स ऑलरेडी मूविंग, करेक्ट है. अभी समझो, जैसे हिट किया, जब ये प्लेट इधर आता है, इसका ऑलरेडी एक वेलोसिटी रहता है और ये v से हिट को होता है, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी लाइक u. लेट u बी द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द व्हील along the center of the plate. Now mass of fluid per second. Now this rho into a into v calculate करते थे ना mfr. So mass of fluid per second is rho into a into v. We are considering v only because इसी derivation में अगर आप ऊपर गए ना, one second. So that's why I'm telling, don't get confused. So when you इधर आपने v minus u लिया था, relative velocity लिया था, but not here. ठीक है, इधर नहीं लेने का. Here it is starting velocity of the fluid itself, velocity of the jet before impact, that is relative velocity, that is v minus u, which is the first is mass of the fluid per second is rho into a into v, but now effective velocity of the jet before impact is relative velocity, वो तो आपको पता है, that is v minus u, which is the of the jet with respect to the plate का v minus u रहेगा, but whereas jet का रहेगा या only fluid का रहेगा only v. So that's why it's rho into a into v. Apply impulse momentum principle. F of x is equal to rate of change of momentum in the direction of force. The rate of change of momentum is nothing but initial momentum per second minus final momentum per second. Now momentum is equal to mass into m into v था. So m1 v1 per second, m2 v2 per second था, बट वेर एज m1 एंड m2 इज इक्वल टू m है, तो इसलिए m और सेकेंड को मैं बाहर लेके आया मास पर सेकेंड, तो ये बच गया. तो ये v1 माइनस v2 दैट इज इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी. ऑलरेडी 10 बार हमने ये डिस्कस किया है, फिर भी मैं बता रहा हूँ. सो वेयर नाउ आई नीड टू फाइंड आउट इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. लेट्स स्टार्ट. इनिशियल वेलोसिटी इज नथिंग बट आई एम टेकिंग स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, ठीक है, नॉट बिफोर वेलोसिटी. स्ट्राइकिंग जब वो प्लेट को हिट करता है, रिलेटिव वेलोसिटी लेना है. इनिशियल क्योंकि हमेशा याद रखो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हमको रिलेटिव वेलोसिटी कंसीडर करना है, क्योंकि प्लेट जो भी है या ऑब्जेक्ट जो भी है वो मूव हो रहा है, इधर ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा है और फ्लूइड तो मूव हो रहा है, तो दोनों वेलोसिटी, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी कम्स इनटू पिक्चर. So initial velocity or striking velocity along the direction of x is equal to v minus u. Y direction में nothing. Final velocity along x direction, no, it is 0. So you apply the formula, you substitute, ठीक है. So you can substitute final velocity, sorry, f of x is equal to आपका mass per second is rho into a into v, and initial velocity is v minus u, final velocity is 0. So f of x is equal to rho into a into v minus u. आपका this is about force exerted. Work done, you know the formula. Work done is equal to force into displacement, correct है ना. Sorry, work done per second. Sorry, 1 second, don't. हाँ, वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू यू. आपने ऑलरेडी ये सब किया था ना, डायरेक्ट ले रहा हूँ, नहीं तो फोर्स इंटू डिस्टेंस पर ये सब फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. यू ऑलरेडी नो वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू यू, मैं डायरेक्ट इधर उसको ले रहा हूँ. सो इधर फोर्स क्या है, रो इंटू, इधर फाइंड आउट किया था, रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू इंटू यू. सो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, और न्यूटन मीटर कैन बी रिटन एज जूल पर सेकेंड और वैट और कैपिटल W, ठीक है.
सो दैट इज वर्क डन हो गया। द लास्ट वन, एफिशिएंसी ऑफ द जेट। तो एफिशिएंसी ऑफ द जेट को भी मैंने बताया था, एफिशिएंसी ऑफ द जेट इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। लेट्स कैलकुलेट बोथ इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर एंड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इनपुट पावर क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड था, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर पर सेकेंड। सो हाफ इंटू एम जो है मिड, करेक्ट है ना, मास पर सेकेंड, रो इंटू ए इंटू वी था, सब्सटीट्यूट करो इंटू वी स्क्वायर। सो आपका इनपुट पावर बन जाएगा हाफ इंटू रो इंटू ए इंटू वी क्यूब, सब लिखा है इधर। आउटपुट पावर पे आओ, वर्क डन पर सेकेंड है, तो वर्क डन तो आपने कैलकुलेट करके रखा है, वर्क डन पर सेकेंड डायरेक्ट लिखो, रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू इंटू यू, सेम। हाँ, एक बार सॉल्व करना है, ऐसे रीड किया, मेरा वीडियो देखा तो आपको दिमाग में नहीं जाएगा, एक बार पेन पेपर पकड़ के बैठना है, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड इट इज वेरी सिंपल डेरिवेटिव। सो सब्स्टिट्यूट करो, एफिशिएंसी ऑफ द जेट इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या था, रो इंटू वी माइनस यू इंटू यू, and input power is half into rho into a into v cube. Then once again you cancel it, ultimately you will get efficiency of the jet is equal to 2 into v minus u divided into u divided by v square. So now efficiency of the jet हमको मिल गया, but if you want to find out the maximum efficiency you need to consider that rotational effect, correct? So that rotational speed is u, so that's why you are going to differentiate the efficiency of the jet with respect to that rotational velocity, that is u, ठीक है? So the efficiency will be maximum when the efficiency will be maximum when the differentiate with respect to u is 0. So this is once again basic maths hai. So differentiation with respect to sorry, efficiency divided by with respect to u किया तो with respect to 0 किया तो so that is differentiation with respect to u किया तो and you consider it is equal to 0 किया तो क्या होता है, so you'll get 2 into v minus du divided by v square, और v square राइट हैंड साइड में लेके आ गया तो 2 into v minus 2u मिल जाएगा, और 2 को भी इस तरफ लेके आया तो सिर्फ बचेगा v minus 2u is equal to 0 और v is equal to 2u. Now you substitute this v is equal to 2u in efficiency equation में, ठीक है? So that means जहाँ पे भी v है तो 2u सब्सटीट्यूट करो, देखो मैंने इधर सब्सटीट्यूट किया हूँ। एफिशिएंसी दैट इज मैक्सिमम ऑफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू 2 इंटू v जगह पे 2u माइनस u इंटू यू डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर। यू डू द बेसिक कैलकुलेशन, यू विल गेट हाफ इंटू यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कैंसिल हो गया तो सिर्फ बचा हाफ, so that means 50% of the efficiency. That means the maximum efficiency is only 50%. This is what it explains, ठीक है? So this is about the when the case 2 when the object is moving, in that one also we considered the flat plate is moving. उसमें भी दो था, सिंगल फ्लैट प्लेट लिया था, देन वी आर replaced by number of vertical flat plates which are mounted on the wheel, and we calculated three things. One is the force exerted, the second one is work done per second, and the third one is efficiency. In that one also efficiency, here we calculated the maximum efficiency also, ठीक है? All these formulas, all these derivations are important, so these will be very helpful for the examination point of view. होप आपको ये क्लास समझ में आया, थोड़ा क्या बोलते हैं, पेशेंस से बैठ के पेन पेपर लिख के वीडियो देखो और थोड़ा पढ़ाई करो, 100% आपको ये आसान लगेगा, ठीक है? चलो, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। होप आपको ये क्लास समझ में आए। थैंक यू।